निगमकल्पतरुगलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. I'd like to recite this. recite करना चाहेंगे. निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. Yes. निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् Okay, Nigama, the Vedic literatures. Kalpataro, the desired tree. Galitam, fully matured. Phalam, fruit. Shuka, Srila Sukadeva Goswami, the original speaker of Srimad Bhagavatam. Mukhat, from the lips of Amrita, nectar, Drava, semi-solid and soft, and therefore easily swallowable. Samyutam, perfect in all respects. Pibata, do relish it. Bhagavatam, the book dealing in the science of the eternal relation with the Lord. Rasam, juice, that which is relishable. Alayam, until liberation, or even in a liberated condition. Moho, always. Oh, oh, Rashika, those who are full in the knowledge of mellows.
Bhuvi, on the earth, Bhavuka, expert and thoughtful. Translation. O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Shukadeva Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. So, O expert and thoughtful man, O Bhuvi Bhavuka, expert and thoughtful man. तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे भूई भावुका शब्द है, जो इस धरती पे एक्सपर्ट लोग हैं उनको बता रहे हैं कि आप व्यासदेव क्या बोले, रलिश श्रीमद भागवतम, आप लोग क्या कीजिए, श्रीमद भागवतम को रलिश कीजिए। ये श्रीमद भागवतम क्या है, मैच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर्ड ट्री, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब वेदा है ना, निगम मतलब वेदा। निगम दो शब्द से बना, नी प्लस गम। नी मतलब बहुत ऊंचा जाना है, गम मतलब जाना है, गमयति इति गम है ना, जो आपको ऊंची डायरेक्शन में लेके जाएगा, है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, निगम। तो वेदों की सहायता से आप ऊंची डायरेक्शन में जा सकते हैं। वेदों को नहीं मान के आप कहाँ जाएंगे, अधोगच्छन्ति। तो निगम से क्या होगा, हम लोग ऊपर जाएंगे। तो उस निगम कल्पतरु जो पेड़ है, उसका जो गला हुआ फल, एकदम पका हुआ फल है, वो क्या है, भागवतम। यह जो फल है उसकी और एडजेक्टिव बताया है, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से टच किया हुआ है। तोता जब फल को थोड़ा टेस्ट करता है तो बोला जाता है क्या, ये पूर्ण रूप से पका हुआ है, बहुत ही मीठा हुआ है, राइट। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, तोते Sukadeva Goswami, having tested this fruit, and what is this fruit? Again, another example, Amrit Drava Samyutam. ये जो फ्रूट है कैसा है, अमृत द्रव, अमृत नेक्टर, द्रव संयुतम, सेमी सॉल्युबल means easily soluble. The fruit which is easily soluble. फ्रूट खाना नहीं है, फ्रूट कैसा है, पीने वाला फ्रूट है। Like there is some bottle of fruity maja. Right? It's not fruity, but it's fruit, but it's soluble fruit. It's not eatable fruit. Have you drunk fruits ever? So here Bhagavatam is a drinkable fruit, a special fruit. So you can drink fruit here. The most nectarian, most soluble and relishable fruit of Srimad Bhagavatam. Vyasa is telling, oh, expert and thoughtful man, please drink it. Please drink this Srimad Bhagavatam. How long I have to keep drinking? कब तक पीना है? कब तक पीना है? रसम आलयम। ये जो रस है कब तक पीने के लिए बोला जा रहा है? जब तक कि आप भगवत धाम न लौटे। उसका मतलब क्या, भगवत धाम लौटने के बाद फिर पीना बंद? Yeah, because in spiritual world, this Bhagavatam is actually coming from a spiritual world. This fruit is coming from a spiritual world. In a spiritual world, in Golok Vrindavan, there is only discussion of what? Everything is Bhagavatam there. Just like Vrindavan, Yashoda Maiya is always what? She is singing churning butter as well as she is singing the glories of his own dear darling son Krishna. Yani Yani cha Gitani. Okay. You remember that particular, the first sloka of that Damodar Bandhan. So Damodar, yes? Damodar, not Damodar Shtakam, in the Bhagavatam, the first sloka of the chapter. When Lord Krishna is bound by Mother Yashoda. Yani Yani cha Gitani. So Mother Yashoda is always singing. She is doing most simple work, but always in the background, what's going on? Bhagavatam. Bhagavatam is going on. I mean, glorification of the Lord, glorification of pastimes of the Lord, qualities of the Lord. So this is Bhagavatam. This is spiritual world. It's wherever Bhagavatam is being discussed, matlab, spiritual world is right there. वहीं पे क्या है?
स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो ये जो भागवतम है, ये भागवतम इस संसार का नहीं है, पूरी वेद और निगम है। निगम 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 मतलब वेद। तो निगम इज एक्चुअली इन्फेस्टेड विथ रजस तमस, सत्व रजस तमस। लेकिन निगम का एक ऐसा फल है, एक पेड़ है, पेड़ में एक ऐसा फल है जो कि पेड़ में लगा हुआ तो है, लेकिन समझिए कि नहीं लगा हुआ, इट्स लाइक टॉप क्लास, टॉप ब्रांच फ्रूट, लाइक इन वन ह्यूज ट्री देयर आर डिफरेंट फ्रूट्स, है कि नहीं। वो सबसे नीचे में फल, स्पेशली कटहल का जो फल होता है, देखिए कटहल का फल कभी कभार तने में लग जाता है, देखिए तने में लगता है, ब्रांच में लगता है कि नहीं, और ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर। तो जो वैदिक पेड़ है उसके कई फल हैं, मुख्य रूप से क्या फल में है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन उस पेड़ के टॉप क्लास ब्रांच में जो फल फला है, टॉप क्लास सबसे ऊपर, वो क्या है, क्या है वो, कंफ्यूजन है। अरे श्रीमद् भागवतम है, वही तो श्रीमद् भागवतम, कहाँ खो गए। इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया है क्या, कि धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम वित्ताम। भागवतम में से सारे चीटिंग टाइप की रिलीजन हटा दिए गए, जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को बढ़ावा देता है कि नहीं। क्योंकि जनता सेंस ग्रेटिफिकेशन के पागल है, जनता को क्या चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन। असुर लोग हैं जनता में, ज्यादा असुर लोग हैं। असुर मतलब, आंसू मतलब तुरंत, र मतलब रमती, तुरंत रमन करना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते, तुरंत वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करके मजा लेना चाहते। दो तरह के लोग हैं, असुर और सुर, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, असुर, तुरंत मजा चाहिए। तो तुरंत मजा चाहिए तो सीधे मोबाइल उठाओ, देखते हैं लोग मजा करते हैं मोबाइल दिन भर, क्या मजा है उसमें, नहीं, एक लगता है मजा है। उसी प्रकार से जितनी भी वस्तु में ऐसा एक्टिविटी पीपल आर डूइंग एक्चुअली लाइक दैट, देयर इज नो हैप्पीनेस इनटू इट, बट स्टिल पीपल आर hooked into it, and Vedas are also given it because we are habituated because of this sense gratification. Yes. So Bhagavatam, what it does, Bhagavatam comes like a lion and tells, go away from here, all sense gratification, kicks away, who kicks away, a royal person, like शेर आता है जहां पे, वहां पे जो छोटे छोटे पक्षी, जानवर, खरगोश, गिलहरी, हिरण, लोमड़ी सब भाग जाते हैं, भागते ही। रॉयल किंग हैज कम। Similarly, Srimad Bhagavatam is like a royal king. As soon as it appears, there cannot be remain darkness. There cannot remain sense gratification. Yes, it's so royal. But it's not only royal, but it is sweet also. Srimad Bhagavatam is, this sloka is describing sweetness of Srimad Bhagavatam. Somebody could be very much royal like lion, but he could not be sweet. But Srimad Bhagavatam is royal like king as well as his. Srimad Bhagavatam is most sweet. It's delicious. Yes. So Pibat Bhagavatam Rasmalayam Mohiraho Rasika Bhuvibhavaka. In the two previous slokas, it has been definitely proved that Srimad Bhagavatam is sublime literature. It surpasses all other Vedic scriptures due to its transcendental qualities. It is transcendent to the mundane activities and mundane knowledge. In this sloka, it is stated that Bhagavatam is not only superior literature, but is ripened fruit of all Vedic literatures. यही है ना, हमने भी डिस्कशन किया है। ये सुपीरियर लिटरेचर ही नहीं, बल्कि ये पका हुआ फल है वैदिक लिटरेचर्स का, पका हुआ फल, निगम कल्पतरो गलितम फल। In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. Yes, considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential into Srimad Bhagavatam. Wait, where did this go?
With a great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by Srimad Bhagavatam. Vedas are compared to the desire tree because they contain all things knowable by man. They deal with mundane necessities as well as spiritual realization. The Vedas contain regulatory principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical, and metaphysical subject matter. And all that may be necessary to keep the body and soul together. Above and beyond all these are specific directions for spiritual realization. Regulated knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual platform. And the highest spiritual realization is knowledge that the personality of Godhead is the reservoir of all spiritual tastes and prasads. Every living entity, beginning from Brahma, the firstborn living being within the material world, down to the insignificant ant, desires to relish some sort of taste derived from sense perceptions. These sensual pleasures are technically called rasas. Such rasas are of different varieties. In the revealed scriptures, the following 12 varieties of rasas are enumerated. First, Raudra. Second, Adbhuta, wonder. Shringara, conjugal love. Hasya, comedy. Veera, chivalry. Daya, mercy. Dasya, servitorship. Sakya, fraternity. Bhayanaka, horror. Vibhatsa, shock. Santa, neutrality. Vatsalya, parenthood. So the 12 rasas. The sum total of all these rasas is called affection or love. Primarily, such signs of love are manifested in adoration, service, friendship, parental affection, and conjugal love. And when these five are absent, love is present indirectly in anger, wonder, comedy, chivalry, fear, shock, and so on. For example, when a man is in love with a woman, the rasa is called conjugal love. But when such loving affairs are disturbed, there may be wonder, anger, shock, or even horror. Sometimes loving affairs between two persons culminate in ghastly murder scenes. Such rasas are displayed between man and between animal and animal. There is no possibility of an exchange of rasa between a man and an animal, or between man and any other species of living being within the material world. The rasas are exchanged between members of the same species, but as far as the spirit souls are concerned, they are one qualitatively with the Supreme Lord. Therefore, the rasas were originally exchanged between the spiritual living being and the spiritual whole, the Supreme Personality of Godhead. The spiritual exchange, or rasa, is fully exhibited in spiritual existence between living beings and the Supreme Lord. The Supreme Personality of Godhead is therefore described in the Shruti mantras, Vedic hymns, as the fountainhead of all rasas. When one associates with the Supreme Lord and exchanges one's constitutional rasa with the Lord, then the living being is actually happy. These Shruti mantras indicate that every living being has its constitutional position, which is endowed with particular type of rasa to be exchanged with the personality of God. In the liberated condition only, this primary rasa is experienced in full. In the material existence, the rasa is experienced in the perverted form, which is temporary. And thus the rasa of the material world are exhibited in the material form of Raudra, anger, and so on. Therefore, one who attains full knowledge of these different rasas, which are the basic principles of activities, can understand the false representations of the original rasas, which are reflected in the material world. The learned scholar seeks to relish the real rasa in the spiritual form. In the beginning, he desires to become one with the Supreme. Thus, less intelligent transcendentalists cannot go beyond this conception of becoming one with the spirit whole without knowing of the different rasas. In this sloka, it is definitely stated that spiritual rasa, which is relished even in the liberated states, can be experienced in the literature of Srimad Bhagavatam due to its being the ripened fruit of all Vedic knowledge. By submissively hearing this transcendental literature, one can attain the full pleasure of his heart's desire. But one must be very careful to hear the message from the right source. Srimad Bhagavatam is exactly received from the right source because it was brought by Narad Muni from the spiritual world and given to his disciple Sri Vyasadeva. The latter in turn delivered the message to his son Srila Sukadeva Goswami,
And Srila Sukadeva Goswami delivered the message to Maharaj Parikshit during the 7 days before the king's death. Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul from his very birth. He was liberated even in the womb of his mother and did not undergo any sort of spiritual training after his birth. At birth, no one is qualified, neither in the mundane nor in the spiritual sense. But Srila Sukadeva Goswami, due to his being a perfectly liberated soul, did not have to undergo an evolutionary process for his spiritual realization. Yet, despite his being a completely liberated person, situated in the transcendental position above the 3 material modes, he was attracted to this transcendental rasa, the Supreme Personality of Godhead, which adored by liberated souls who sing Vedic hymns. The Supreme Lord's pastimes are more attractive to liberated souls than to mundane people. He is of necessity not impersonal, because it is only possible to carry on transcendental rasa with a person. Yes. So, in Srimad Bhagavatam, the transcendental pastimes of the Lord are narrated, and the narration is systematically depicted by Sukadeva Goswami. Thus, the subject matter is appealing to all classes of persons, including those who seek liberation to relish the humor of becoming one with the Supreme Whole. In Sanskrit, the parrot is also known as shuka. When a ripened fruit is cut by the red beaks of such birds, its sweet flavor is enhanced. The Vedic fruit, which is mature and ripe in knowledge, is spoken through the lips of Sukadeva Goswami, who is compared to the parrot, not for his ability to recite the Bhagavatam exactly as he heard it from his learned father, but for his ability to present the work in a manner that will appeal to all classes of men. The subject matter is so presented through the lips of Srila Sukadeva Goswami that any sincere listener who hears submissively can at once relish transcendental tastes which are distinct from the perverted tastes of the material world. The ripened fruit is not dropped all of a sudden from the highest planet of Krishna Loka. Rather, it has come down carefully through the chain of disciplic succession without change or disturbance. Foolish people who are not in the transcendental disciplic succession commit great blunders by trying to understand the highest transcendental rasa, known as the rasa dance, without following the footsteps of Sukadeva Goswami, who presents this fruit very carefully by a series of transcendental realization. One should be intelligent enough to know the position of Srimad Bhagavatam by considering personality like Sukadeva Goswami, who deals with the subject so carefully. This process of disciplic succession of Bhagavad school suggests that in the future also, for all times, Srimad Bhagavatam has to be understood by a person who is factually a representative of Srimad Sukadeva Goswami. A professional man who makes a business out of reciting Bhagavatam illegally is certainly not a representative of Sukadeva Goswami. Such a man's business is only to earn his livelihood. Therefore, one should refrain from hearing the lectures of such professional men. Such men usually go to the most confidential part of the literature without undergoing the gradual process of understanding this great subject. They usually plunge into the subject matter of rasa dance, which is misunderstood by the foolish class of men. Some of them take this to be immoral, while others try to cover it up by their own stupid interpretations. They have no desire to follow in the footsteps of Sukadeva Goswami. One should conclude, therefore, that the serious student of rasa should receive the message of Bhagavatam in the chain of disciplic succession from Srila Sukadeva Goswami, who describes the Bhagavatam from its very beginning and not whimsically to satisfy the maintainer with very little knowledge in transcendental science. The Bhagavatam is so carefully presented that a sincere and serious person can at once enjoy the ripened fruit of Vedic knowledge simply by drinking the nectarian juice through the mouth of Srila Sukadeva Goswami. Or bona fide representative. Om Jnanatimirandasya Jnanandjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dudati Swapadamtikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagra Chatam Sahagana Raguna Manvikantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam
कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पदेशधारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we are just completing the Mangalacharan spoken by Srila Vyasdev. Srila Vyasdev के द्वारा बोला गया ये मंगलाचरण है। ये तीसरा श्लोक जो कि श्रीमद् भागवतम के स्वीटनेस और फिर मधुरता को दर्शाता है। श्रीमद् भागवतम तो अवश्य ही सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता जब श्रीमद् भागवतम है, और जिसके सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि हृदय में जाके बंद हो जाता है। जैसे ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण स्टार्ट होता है वैसे ही भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद दरवाजा अंदर से पता नहीं अंदर से बाहर से बंद हो जाता है। अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभि तत्क्षणात् समय नहीं लगता। तो फिर अगर ऐसी पुस्तक है तो फिर अन्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता, ये बताया गया। तो अन्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह पुस्तक कैसा पुस्तक है, पावरफुल है इतना कि भगवान को ही बंद कर सकता है, लेकिन बहुत मीठा भी। निगम कल्पतरोर दलितम फलम, एक ऐसा फल है, कृष्ण प्रेम का जो फल है, यह सिर्फ स्वलगल। पहला तो ये कैसा है, गला हुआ फल है। साथ साथ में क्या है, इट इज द्रव आल्सो, फल भी है साथ साथ में ये द्रव भी है। द्रव मतलब सेमी सॉलिड। सो गलितम फलम सुख मुखाल अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा टेस्ट किया हुआ ये द्रव है अमृत संयुतम, और पिबत भागवतम रसमान। यह जो अमृत द्रव है इसको पीने के लिए व्यासदेव सभी व्यक्तियों को, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लोग, उनको बताया जा रहा है कि आप लोग आइए और श्रीमद् भागवतम पीजिए। जैसे ही परीक्षित महाराज को ये शाप लगा, वैसे ही सारा का सारा न्यूज कहां तक पहुंचा, ब्रह्मलोक तक पहुंचा। और सभी बड़े बड़े जो देवतागण है सभी आ गए कहाँ, हस्तिनापुर, दिल्ली। तो हमारे दिल्ली है, जहाँ से दिल्ली भारत की राजधानी है, कोई ऑर्डिनेट नहीं है, ब्रह्मांड के सभी लोग जानते हैं यहाँ पे दिल्ली है करके। तो वहां पे यमुना के किनारे सभी आ गए, सारे देवता जितने भी ऋषि मुनि हैं, इवन ब्रह्मा जी हिमसक, यमराज हिमसक, सब लोग आ गए वहां पे। क्या करने के लिए, सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही व्यासदेव लिख चुके हैं भागवतम में कि आगे परीक्षित महाराज का कर्ष होगा और फिर सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलेंगे। इट इज प्री ब्रॉडकास्टेड मैसेज। तो जो आगे होने वाला है यह व्यासदेव ने पहले ही भागवतम में इसको लिख दिया है। तो भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भागवतम परीक्षित महाराज के कर्ष होने से पहले ही लिखा हुआ है। तो व्यासदेव को पता है इसका मतलब क्या है, और किसी को पता नहीं, सबको पता है कि व्यासदेव ऐसा लिखे हैं और ऐसा होने वाला है। तो जैसे परीक्षित महाराज को कर्ष होता है वैसे ही सभी ऋषि मुनि आ जाते हैं और वहां पे सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और परीक्षित महाराज आते हैं और वहां पे सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम की जो स्पीच है उसको चालू करते हैं। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम ये बोल रहे हैं। तो सुख मुखान अमृत द्रव संयुतम,
और इस सुख मुखाद के अमृत को सुनने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या चाहिए? सबमिसिव हियरिंग। हम लोग सबमिसिव हियरिंग करें, सिंसियर हियरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वी कैनॉट अंडरस्टैंड इट। In the fruity mentality, in speculative manner, we can never understand. In fact, Indradev was also there, and he brought Amrit of heavenly planet. Amrit, जो अमृत निकला था समुद्र मंथन में, उस अमृत को लेके आए थे और उन्होंने बोला कि हम दक्षिणा में आपको ये अमृत देंगे, सुखदेव गोस्वामी कृपया भागवत का अमृत हमें सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत उनको लताड़ मारे, बहुत गुस्सा हो गया। तुम क्या समझता है, श्रीमद् भागवतम का अमृत को तुम अपने अमृत से तुलना कर रहा है? दुष्ट कहीं का, बेहूदी वाली बातें कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। और सभी को बोलते जब तक ये जाएगा नहीं बंदा यहाँ से, भागवतम क्लास चालू नहीं होगा। तो इंद्रदेव को वहां से जाना पड़ा दंड। सो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। तो कौन व्यक्ति है जो कि इसको रियलाइज कर सकते हैं? जो रसिक, रसिक मतलब जिनको रस तत्व का ज्ञान है, रस विज्ञान। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? द साइंस ऑफ रसा। तो जो रस विज्ञान में मशहूर है, जो बेरस लोग हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल भागवतम को। रस मतलब जो भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं, और जो बेरस मतलब क्या? उसका उल्टा, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में रस प्राप्त करते हैं। तो जो रसिक लोग हैं उनके लिए भागवतम बोला गया कि रसिका भूरि भावुका, पीबत, पी लो, आप पियो, इट्स ड्रिंकेबल फॉर यू। और ये जो फ्रूट है भागवतम, ये गोलोक वृंदावन से आया है। वैदिक पेड़ का सबसे टॉप ब्रांच का ये फल है, और इस फल को कौन लाए हैं? श्रीपाद नारद मुनि। तो नारद मुनि लाए हैं। नारद मुनि से पहले किनको प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी को किसने दिया? भगवान नारायण स्वयं दिए इस भागवतम को 4 श्लोकों में, जिसका द्वितीय स्कंद में इसका वर्णन आता है। 4 श्लोकों में दिया, फिर 4 श्लोकों को फिर 10 भाग में बांट के ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदय मनवंतर ईशानो कथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो ये 10 टॉपिक श्रीमद् भागवतम डिस्कस्ड, लेकिन भगवान ने बोला था बस 4 श्लोक में, जिसमें कितने टॉपिक डिस्कस्ड हैं? यूजुअली 3 टॉपिक्स डिस्कस, सब कुछ उसमें है, लेकिन 3 टॉपिक को उन्होंने 10 टॉपिक में डिवाइड किया। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, उसके बाद फिर सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उदय मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। So in this way, Srimad Bhagavatam was given to Narada, and Narada gave to Vyasdev, and Vyasdev gave to किनको दिए? श्रील सुखदेव गोस्वामी। So this fruit is actually being given very systematically. Fruit is not thrown as Srila Prabhupada is doing. जब पेड़ के ऊपर में चढ़ के आम कैच कर लो करके, आम कैच कर लो, मैं फेंक रहा हूँ, पता नहीं कैच किया कि नहीं किया, कैच किया भी तो ठीक ठाक से कैच किया कि नहीं किया। So Srimad Bhagavatam was actually very nicely handed over from one person to another person, from another person. That's why it is unbroken. यह फटा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि फेंक दिया हाथ में ही फट गया, क्योंकि it is semi-solid liquids, and that's to fruit. There is no skin, and there is no seed also. It's only nectar, nothing to be thrown. So that fruit is actually coming from Golok Vrindavan one by one in this haptic succession. So devotees are requested to accept it. How? With submission and a service attitude. Then he will be able to relish the Srimad Bhagavatam, the ripened fruit of Vedic literature. And one should, how long one should relish it? So once reading enough? No.
Keep relishing it. Unlimitedly keep relishing it. That's the perfection of Srimad Bhagavatam reading. So, in this way, there are some more points like rasa. All that rasa which is there in this world, which actually the reflection of that eternal spiritual rasa in the spiritual world. Material, whatever rasa is there. So actually those rasas are actually perverted reflection. Hardly there is any taste into it. But it seems like it the rasa. But all that rasa is actually really reciprocal only with Krishna. All that rasa. Starting from neutrality. After neutrality comes servitorship. Servitorship. Then after that, fraternity. Fraternity. Then after that, yes, Vatsalya, parenthood. Then after that, conjugal love. So, Danta, Dasya, Sankhya, Vatsalya और माधुर्य ये 5 रसा हैं, the main रसा. और ये 5 रसों में विघ्न होता है तो फिर आगे जितने भी रसा हैं उनकी उत्पत्ति होती है. 7 और रसों की उत्पत्ति होती है. So all these things are there in material world. लेकिन material world में इसका रेसिप्रोकेशन कभी भी हो नहीं पाता. होता है कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाता है. This all rasa could be only relished in association of Krishna, in the service of Krishna. So this Srimad Bhagavatam is filled with these all rasas. Yes, and when somebody reads Srimad Bhagavatam, then able to relish these all rasas with Krishna. And Krishna has enacted his pastimes, unlimited pastimes, in all these rasas. And this is actually in the Srimad Bhagavatam. Very nicely found. So now the Srimad Bhagavatam is going to start from next sloka. I mean, the whole content of Srimad Bhagavatam, Vyasa is going to put. So we'll discuss it next Sunday. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Any question, any comment? Anything to discuss? Yes, Prabhu. So Prabhupada said that rasas can be exchanged between people of same people. Yes.